Okay, so hi team, recording has been started. So in last session we have seen what is Bootstrap, why we use it, and then we started the grid system of Bootstrap, like how grid system of Bootstrap work, right? So in today's session we'll continue the same and we'll check how we can make use of other ready-made classes or components of Bootstrap and make our home page, right? So we'll see the same. Okay. So let's see our code base. Let's go back to getbootstrap.com. Docs. Yeah. So in the docs, you will find components. So in the components, we'll go and check different options. I mean, whatever, what and all ready-made things, it has given, for example, accordion, see accordion, right? So accordion, they have the ready-made, CSS. Yeah, the ready-made CSS, but at the same time, we need Bootstrap JS as well. So we'll not touch any component where we have the JS involved. Okay. So as of now, we'll first see how we can make the home page beautified, how we can make our base application with the help of CSS only, right? We'll see that. The accordion, correct? Then we have your alerts, ready-made alerts like you have a error message, so this kind of alert will come. If it is successful, so this kind of alert will come. If you wanted to give some information, the bluish can come, right? Correct. Okay, then badges. Have you seen badges like this? Have you seen badges? Correct, information badges, like alert badges. Yes, sir. Okay, so badges in the button. So these kind of notifications, right? So Yes. see, you don't need to create the CSS by your own. The only point is you don't need to, do it by yourself. You don't need to style it. It's already given. The classes are already given. HTML is already given. You just need to use it, right? You just need to use it. Okay. Then someone wants to join in. Yeah. Hi, Riva. Hello, sir. Then we have breadcrumbs. So Riva, we are talking about Bootstrap. So do you know about Bootstrap? It's a responsive Yes, structure. little bit. Yes, a little Okay. bit. Okay. So see breadcrumbs. Breadcrumbs are nothing but the site navigations where it shows you, okay, you are at data page, you are at library page, right? You came from home,
then you click on library, then you are a database like breadcrumbs. Okay. Again, you don't need to create a CSS for it. It's already given. See, right? See, already there. You just need to use the class or the code they have mentioned, right? Then you see buttons. We always spend time on buttons, but see, we don't need to do that. They already given the button. Same plain old simple HTML, button HTML, and only thing that you need to put is class. तुम्हें सिर्फ class डालनी है. Button is the base class जो डालनी है. You have to do it at any cost. And then you need to put a specific class. It's a button primary, so that this primary color will come. Button secondary, so that secondary color will come. Button success, so that the success kind of color will come. Danger, warning, info, light and dark. Correct? Clear? Simple, eh? Yes. Okay. And finally link भी है. अगर आपको button as link चाहिए, link, तो वो भी है. Right? This is your button, which will act like a, sorry, it is a, I mean, it is, yeah, it is a button, but it'll show like a link, act like a button. See, outline button. If you don't want the other button, so if you don't want, the filled button, you have outline also. Simple, you need to put outline. That's it. And you will have that CSS. See, I mean, beautiful, isn't it? Already you have classes, you just need to apply it. And size wise also you can play with it. Large buttons, so you can say button LG. Small button, you can say button SM, right? Button MD. If you wanted to disable the button, you just need to add a disable class, right? You just need to add a disable class. Getting my point? Yes, yes. Okay. If you need a button as blocks, I mean, it should get the entire width. Have you seen login pages where button is end to end? Let me show you some. You're able to see my screen, right, team? Yes, sir. Yes, visible. See, this is button block end to end. It'll take the entire width, whatever it can. Understood? Correct, team? Yes. Yes, sir. So to apply this class as a This entire one is called block button, right? correct, correct, correct. Yes, yes. So with the help of just ready-made CSS, you can make it possible. Button groups, you wanted to put the buttons back to back buttons, not like this. Like it will be helpful in the case of checkbox. Sometimes we need such situation, right? Either this or this or this, right? Get your point? See, like this. So you can use that button group class, btn group, right? You can make this in Bootstrap. See, best example, pagination. Best example, pagination. Your pagination can be done like this. Okay.
Team clear or no? See vertical menus. Yes, sir. You Yes, can make clear. vertical. You can make vertical menus. You can make vertical menus. Button with drop down. I missed that. Button with drop down. No need to create anything from the scratch. No need to invent the wheel, reinvent the wheel. Someone was asking me for cards. Who was that? In the last session, someone is saying cards नहीं समझ में आता. कौन था? Anyone? I guess आज नहीं है session में. Okay. See cards. Cards, like you can create card like this. Have you seen this card anywhere? Yes, sir. Where have you seen that? You can create the price with this card. Do you agree or not? The assignment which I've given this one, correct? You can create it with the help of cards Yes, sir. or see this? You can make it with the help of card. Getting my point? Yes, sir. How? If you see this code in the card class, first is image, you need to use the card class. First is the image you put, correct? Then second is your body. Your body has a title, then some text, right? And then a button, right? Correct team? Yes, sir. But in अच्छा, okay, sir. Tell me. बोलो बोलो. Of that, sir, वो जो डिजाइनिंग तो इसमें नहीं होगा ना सर? उसके लिए अलग होता है ना? डिजाइनिंग क्या समझा नहीं. सर Did वो जो not get you. बॉक्स सर जो बॉक्स के अंदर जो ग्रीन कलर जैसे यूज किया गया है हाँ, उसके बाद वो तो हमें डालना पड़ेगा ना. वो तो that we need to put सर उसमें जैसे कि सर कैसे base structure. वेव टाइप का हाँ 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 जो base वेव टाइप का structure. स्ट्रक्चर करेक्ट. ये जो अंदर का पार्ट है, this we need to put. ओके सर What I'm trying to say is, जो इसके ऊपर जो डिजाइनिंग है, I mean, Bootstrap will give you the basic structure that you don't need to create. So in no time you will be able to create this. उसके बाद तुम्हें सिर्फ फोकस करना है अपनी डिजाइनिंग पे, मतलब तुम्हें और इसे कैसे एनहांस करना है. ओके सर लाइक तुम्हें इस तरह का जो ग्रीन कलर ये देख रहे हो व्यू, ये एक इमेज होगी जो तुम्हें यूएक्स से मिलेगी. तो यूजर एक्सपीरियंस वाला होगा तुम्हारा फोटोशॉप, जो डिजाइनर होगा वो तुम्हें इमेज दे देगा. यू नीड फिर टू जैसे पुट दैट बूटस्ट्रैप इमेज. में नहीं मिलता है सर दिस आर नॉट पुटिंग इन बूटस्ट्रैप ऑल दिस डिजाइन एंड एवरीथिंग Strap will not be able to get this is customized designing, no? This is customized designing. This image is a customized image. Let's say if you want your image on I mean here. So when how Bootstrap will give it to you? Bootstrap will give you the option that see Bootstrap will give you the option to insert an image here. Now what image you are putting, that totally depends upon you. Getting your ओके point? सर ओके ओके Then carousel. See this one. This is carousel. Right? Carousel. So carousel also they have given the classes.
There are a lot many actually. Close button. Let's see everything today, and then we can apply. So close button, right? So just need to say class close button. So it will, add. So again, for this close button, you don't need to do any styling. You just need to add the class and it will work. Are you getting my point? Yes, sir. So do remember all these things because to make a home page or to make application, right, you need all these things. Do you agree with me or not? आपको कोई भी वेब एप्लीकेशन बनानी है तो आपको ये सब होगा ही होगा, लगेगा ही लगेगा, right? Yes, sir. Drop downs. How you can make drop downs? So when I say drop down means like this. Have you seen avatar icon at the rightmost corner? See, this is what? This is a drop down. तो हम इस बटन को स्टाइल करके एक सर्कुलर कर सकते हैं और फिर उसके क्लिक पर पॉपअप खुलेगा। देखो कहीं लॉगिन किया हो तो तुम्हें बताऊं मैं। See, drop down, right? Buttons with drop down, correct? List. कितनी बार, I mean, how many time we need that list, right? So we just need to add, and it's a simple ULLI. But by only putting, the list group class, we can make it happen. देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ list group class डालनी है और LI में list group class item. That's it. And you will have your list ready. By adding this active class, you can make it, blue. I mean, when you click on one of the item, तो वो एक्टिव रहेगी, तो जिस पे क्लिक किया वो एक्टिव हो जाएगी, या होवर पर तुम लगा सकते हो एक्टिव क्लास, जिसको एक्टिव, जहां पर एक्टिव क्लास डाल दोगे वो हाईलाइटेड हो जाएगा, राइट? अगेन डिसेबल ऑप्शन भी है, सो सब कुछ रेडीमेड है। आई मीन यू कैन यूज इट इमीडिएटली। देखो विद लिंक्स, ये विद लिंक्स है, सी नंबर्ड। अगर तुम्हें नंबर चाहिए तो तुम्हें खुद हार्ड कोड नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ एक क्लास डालनी है लिस्ट ग्रुप नंबर्ड, तो अपना नंबर आ जाएंगे। अच्छा ये बताओ मुझे, कितनी बार तुमने देखा होगा साइट्स पे ये बना हुआ, स्पेशली मोबाइल एप्स पे, Yes, sir. Gmail में. राइट? अब तुम इसे बनाने में खुद, अगर खुद बनाओगे तुम इसे, तो इट विल टेक एटलीस्ट 8 hours, एटलीस्ट 8 hours for you. I can make it in 30 minutes without Bootstrap, but if you let's say need to make it by yourself, it will take at least 8-9 hours for you, 8 to 10 hours for you, hours to you. लेकिन Bootstrap में it's a matter of just 1 minute. कॉपी करो और पेस्ट करो, ये तुम्हारे को तुम्हारे सामने डेटा चेंज करना सर। See with the badges, with the badges. अब badges में अगर राउंडेड स्पेल कर दिया तो राउंडेड आ जाएगा, राउंडेड पिल कर दिया तो पिल्स, जैसे टैबलेट होती है ना पिल, राउंडेड पिल की फॉर्म में आ जाएगा। बीजी प्राइमरी को अगर तुमने सक्सेस कर दिया तो एक ग्रीन कलर का हो जाएगा।
वार्निंग या वो कर दिया, व्हाट यू कॉल इट, अगर इसे वार्निंग कर दिया या डेंजर कर दिया तो ऑरेंज या रेड हो जाएगा ये। अग्री? देखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल भी है, राइट? ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। सो जस्ट क्लास पुट करनी है, लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल, और वो वर्क करेगा। सीरियस वन, कॉन्टेक्चुअल क्लासेस, तुम्हें किसी लिस्ट के अंदर उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर देना है। एग्जाम्पल, लेट्स से तुम्हें किसी किसी पर्टिकुलर को हाईलाइट करना है रेड कलर से, मे बी वो डिफॉल्टर है, मे बी एरर है, मे बी इशू है, तो जो जो प्रॉब्लमेटिक है उसको तुम्हें रेड कलर से हाईलाइट करना है, और जो ओके है उसे ग्रीन कलर से करना है। तो यू कैन यूज दिस क्लास। तुम कैसे करोगे? स्टाइल ऐड करोगे। अगर तुम्हें करना हो तो तुम क्या करोगे? स्टाइल ऐड करोगे या खुद की क्लास बनाओगे जिसमें बैकग्राउंड कलर लाइट रेड होगा, कलर डार्क रेड होगा? इज दैट यस और नो? Yes, sir. बट यहाँ पर तुम्हें सिर्फ अपनी क्लास लगानी है, दैट्स इट। करेक्ट? सो कभी भी कुछ बनाना है तो पहले बूटस्ट्रैप चेक करना, ऑलवेज। बैजेस हो गया, सीरियस वन, ये तो तुम्हें बहुत बार देखा होगा, यस और नो? Yes. इस तरह का साइट पे बहुत बार देखा होगा तुमने। विद चेकबॉक्स, विश लिस्ट, देख रहे हो? फॉर्म्स में चाहिए होता है, राइट? हमें फॉर्म्स में चाहिए होता है। मॉडल, मॉडल का मतलब क्या होता है? मॉडल पॉपअप, मॉडल पॉपअप, जैसे तुमने इस तरह का मॉडल आएगा, समझो? फॉर एग्जाम्पल, मैंने बटन पे क्लिक किया तो मेरा एक मॉडल आया। डू यू वांट्स टू, फॉर एग्जांपल मॉडल आया, डू यू वांट्स टू सेव द चेंजेस, यस और नो? सो इफ यू से क्लोज, इफ यू से यस, तो मतलब यू वांट टू सेव द चेंज, और यू वांट टू डिलीट इट, और यू वांट टू एडिट इट। मेरी बात समझे? हेलो? Yes, sir, sir. got it. क्लियर है ना? Yes, sir. तुमने वो देखा है, आता है इस पे एक्सेप्ट पर, एक्सेप्ट, ये सब एक्सेप्ट टर्म्स टर्म्स एंड एंड कंडीशन कंडीशन, में आता है। करेक्ट? Yes, sir. तो अगर मैं इस बटन को लिंक कर दूं, अगर मैं क्लास btn की जगह क्लास बटन लिंक लगा दूं, तो ये लिंक की तरह आ जाएगा, और ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा, आई मीन टर्म्स एंड कंडीशन, करेक्ट? जब कोई क्लिक करेगा तो लॉन्ग मॉडल खुल के आ गया, फाइल नीचे बटन आ गया, आई एक्सेप्टेड, और यस आई एग्री, राइट? क्लिक किया, आई एग्री पे, क्लोज हो गया। अंडरस्टूड टीम? क्लियर है? Yes, sir. ये तो सब उसने पॉसिबिलिटी बता रखी है कि और क्या कर सकते हैं। फॉर्म खोलना है भाई, नहीं बस, जरा अब देखना जरा कि और क्या कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में हम। तो ये तो सिंपल लिंक्स हैं, सिंपल लिंक्स, हॉरिजॉन्टल लिंक्स,
तो अगेन ULLI हम लगा रहे हैं, बट क्योंकि हमें लिंक बनाने, मेन्यू लिंक्स बनाने, तो यहाँ पर क्लास क्या यूज हुई है, नेव, राइट, एंड नेव आइटम, गॉट अ पॉइंट, नेव एंड नेव आइटम. Yes, sir. Got it. If you wanted to, pull all the links at right hand side, तो तुम्हें सिर्फ ये क्लास लगानी है, justify content end. ऊपर क्या था, justify content start, justify content center. तो अपने आप जो है वो फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट, ये सब चीजें देख लेगा. क्लास लगानी है फ्लेक्स कॉलम. तो अब जो नेविगेशन, आई मीन नेव बार्स हैं, जो मेन्यूज हैं, वो वर्टिकल आ जाएंगे. तो तुमने कई साइड्स में देखा होगा ना, ये इसी साइड को देखो, बूटस्ट्रैप को देखो, इस साइड पर लेफ्ट साइड में नेविगेशन है या नहीं है, मेन्यूज है या नहीं है, Yes, टीम sir. यस और नो. तो ये ऐसे तो Yes, बने हुए sir. हैं. देखो क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें, राइट. ये लिंक्स वही तो है, सही. अब टैब्स, हैव यू सीन टैब्स, टैब्स देखें, टैब्स. Yes, sir. तो एक ही पेज पे सपोज डिफरेंट डिफरेंट टैब्स दिखाने हैं, जैसे टैब्स का एग्जांपल दिखाता हूँ लाइव. पोर्टफोलियो में भी, या सी, ये आइडेंटिटी टैब है, ये डिजाइन टैब है, ये ग्राफिक टैब है, ये डिजाइन आइडेंटिटी टैब है, राइट. ये टैब्स है डिफरेंट डिफरेंट. आपके लिंक्स पे आपके बेसिकली टैब्स हैं, और हर टैब के कंटेनर में उसकी अपनी आइटम्स है. जैसे आइडेंटिटी पे क्लिक करोगे तो उसका कंटेनर खुल जाएगा. समझे? यू गॉट माय पॉइंट और नो? Yes, sir. Got it. अलग अलग टाइप के टैब्स हैं. नेव बार. अभी तक हमने साइट के मेन्यू पे बात नहीं की. ये जो मेन्यूज हैं ऊपर टॉप पर, ये मेन्यूज, ये कैसे बनाए, देख रहे हो, ये कैसे बनेंगे. तो इफ यू गो टू बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप में इसका प्रोविजन है, दे हैव गिवन यू ऑप्शंस टू क्रिएट नेव बार. लेट मी शो यू द गुड वन. Yeah. See, already ready-made, नेव बार. ये तुम्हारा क्या होगा, साइट नेम, सॉरी कंपनी नेम और लोगो, and these are your links. If you want a search box or something, you remove it. Otherwise, if you want, you can have it. Otherwise, remove it. Very different colors में. तो ये डार्क, BG डार्क मीन्स ये ब्लैकिश में आएगा, BG प्राइमरी मीन्स ब्लूइश में आएगा, राइट. और यू कैन प्ले लाइक दिस एज वेल. अपना खुद का स्टाइल भी डाल सकते हो. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, ब्लू नहीं चाहिए, मुझे ऑरेंजिश चाहिए, तो यू कैन यूज लाइक दिस. गेटिंग माय पॉइंट? सर अगर ट्रांसपेरेंट करना है तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दो, तो नहीं आएगा उसमें तो कुछ कोड वर्ड है कि ऐसा ही है फिर मतलब बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, दैट्स इट. ओके, वन सेकेंड. अगर तुम नेव बार लाइट, बैकग्राउंड लाइट करते हो तो इस तरह का लाइटिश आ जाएगा. Excuse me, sir. Yeah. Sir, other teams are also waiting on the same link. Closing in on the same this link. Yep. No, they have the other link.
This is for these people only. Okay, give me 10 minutes. Let me at least go through with this and then we can apply. And team, tomorrow again we have session. Okay. So Yeah, we will be up. yeah. Hello, So what time, team. sir? Same time. I mean, I'll try to do it at 9 because 9:30 I have a client call. So can you do it at So 8 o'clock, sir? can we do it? So 8 or 8:30, something like that. 8 we can do 8 sharp 8. I'll start. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Hello. Yeah. Sir, when will we start React? When we start what? React JS. React or Angular? We'll start with Sir, Angular first. After this, after once this bootstrap will be over, then we start okay, sir. the Okay, front sir. end program. Okay, then we start the main stack. Okay, sir. Okay, so that you can make use of these things into your actual code. Okay, sir. Okay. Okay, so done. Today just go through with it. Tomorrow we actually work on the home page. We'll create one home page tomorrow. Okay, by using these class. Pagination placeholder, leave it. Pop up, leave it. Okay. Spinner. So spinner. You always need, this spinner, correct? Because for any API call, any backend call, correct? You need a spinner so that you can show it to user that something is happening. Do you agree or not? Yes, sir. Right? See, you have ready-made spinner. Just need to use the class. That's it. Ready-made spinner. Which kind of spinner you want, you can choose it. See this one with different colors. Right? So if you increase the width, it'll be big. See, on the button if you want. See this? On the button if you want. Correct, team? Yes, sir. Apart from spinner, what else I wanted to show you? Toast. One second. Toast. Uh, Toast service. We call it toast service. What toast service will do is, I mean, it will. How should I explain you? Okay, so let's say you are doing some So operations, access reminder. kind of, but we use it for many other usages, use case also. We use it in many other use cases also. For example, let's say you uploaded your picture. Okay. Now you don't want to wait that once my picture will be uploaded, then I will go to that page, right? You upload your picture and immediately you move to, let's say, some other page. Now, once your picture is uploaded, correct? Then some notification should come in front of you and say, hey, that image got uploaded. Okay. Getting a point? So let's say you click somewhere and you are at some other page now, and then message is coming, hey, your image has been uploaded. Got a point? And you can close it like this. Did you understand what I said? समझ में आया मेरी बात? Yes, Team? sir. ठीक है ना? Yes, sir. टूल टिप्स छोड़ दो. उसके अलावा let me just show you some good things. I mean, जिनके लिए तुम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो,
खुद कलर्स या स्टाइल्स बनाने के लिए। सो मैं तुम्हें दो तीन चीजें दिखाता हूँ। कलर लिंक्स, अगर तुम्हें लिंक पर कलर चाहिए तो you will have the colored links, but this is not what I wanted to show you. Ratio, position, stack, visual, hidden, position, utilities, background colors. See, तुम्हें अगर टेक्स्ट को डिफरेंट कलर देना है तो तुम्हें खुद क्लास लिखने की, खुद स्टाइल लिखने देने की जरूरत नहीं है। आई मीन ऑल द मेन कलर्स आर ऑलरेडी देयर फॉर यू। देखो, प्राइमरी में ब्लू कलर आ जाएगा अपने आप टेक्स्ट पर, सेकेंडरी पर ग्रेइश आ जाएगा, सक्सेस पे ग्रीनिश आ जाएगा, राइट? गेटिंग पॉइंट? क्लियर सम? Yes, sir. कि अगर तुम ओपेसिटी क्लास डाल दोगे तो ओपेसिटी भी अपने आप कम हो जाएगी, तुम्हें स्टाइलिंग करने की जरूरत नहीं है। ओपेसिटी मींस ट्रांसलूसेंट। ओके, देखो ये ओपेसिटी है। सी, तुम्हें सिर्फ ओपेसिटी 75, 50, 25 ये क्लास डालनी है। ओके, बूटस्ट्रैप में रेडीमेड आपके पास वेरिएबल्स भी होते हैं, बट ये मैं तुम्हें कभी फिर बताऊंगा जब जब हम एंगुलर स्टार्ट करेंगे। आई गेस देन इट विल बी अ गुड टाइम टू शो यू ऑल दीस थिंग्स। हाँ, एक और चीज इसमें, शेडो साइजिंग, साइजिंग width with percentage, not sizing exactly. Text, टेक्स्ट रैप बहुत जगह जरूरत पड़ती है टेक्स्ट रैप की। तुम्हें खुद CSS लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐड अ टेक्स्ट रैप क्लास, राइट? कितनी बार तुम्हारे को ये इस कोड की जरूरत पड़ती है कि जितना भी अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसके बाद उसे नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दो। टेक्स्ट ब्रेक, अपने अपने टेक्स्ट को कैपिटलाइज करना, करे अपर केस करना, कैपिटलाइज करना, राइट? लोअर केस करना, सो ऑलरेडी क्लासेस है, जस्ट अप्लाई द क्लासेस एंड वर्क। ओके, फॉन्ट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉन्ट साइज 6, सिंपल क्लास डालो, इतना फॉन्ट साइज है। सपोज तुम्हें बहुत मतलब मैक्सिमम हेडिंग डालना है, करेक्ट? तुम्हें फॉन्ट साइज सबसे बड़ा फॉन्ट साइज चाहिए, तो FS1, 2, 3, 4 like this, you just need to add the class and accordingly the font size will increase or decrease, right? Clear है? Yes, sir. Clear. See, font weight bold, font weight bolder, font weight normal, font weight light, lighter, italic, सब रेडीमेड क्लासेस है, तुम्हें किसी स्टाइल को टच करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे को क्या दिखाना था? टाइपोग्राफी, Excuse me. या So, should I postpone the meeting? just let them know for wait for 5 minutes. Okay, sir. See, many of the time you need to write like this कि main heading तुम्हें डालना है बोल्ड में, और उसके बाद जो जो फॉलो अप लाइन है वो तुम्हें म्यूट करनी है। म्यूट मतलब लिटिल लाइटर, जैसे our company name is Scorpio Solution, so that should be in bold, Scorpio Solution. But the tagline, the punchline, looking for the excellency, right?
or looking for the unique solution, right? Some tagline, punchline. वो हमें इसके नीचे little lighter color में चाहिए. So we can use the class called text muted. See this one, display heading. अब तुम्हें font size को खुद से increase करने की जरूरत नहीं है. You have the display classes. With the help of display classes, अपने आप जो है font family, font size सब कुछ apply हो जाएगा. Display 1 is will give you this much big display. Display 2, 3, 4, 5, 6 like this. See, class display. Understood? अगर तुम्हें किसी पैराग्राफ में कोई लीडिंग लाइन लिखनी है, पैराग्राफ में कोई लीडिंग लाइन लिखनी है, सो क्लास लीड यू कैन अप्लाई, राइट? ये मुझे तुम्हें बस लास्ट दिखाना था. दिस वाज डिस्प्ले. इमेजेस के लिए रिस्पॉन्सिव इमेजेस क्लास है, इमेज फ्लूइड. इफ यू अप्लाई इमेज फ्लूइड क्लास, योर इमेज विल बी रिस्पॉन्सिव, मींस इट विल एडजस्ट एज पर द कंटेनर साइज. ठीक है? टेबल देखो, तुम जस्ट टेबल बनाओ, वो कैसे दिखेगी, और ये देखो टेबल क्लास लगाने पे क्या होगा. टेबल अगर तुमने टेबल क्लास लगा दिया, अपने आप पैडिंग, मार्जिन, लाइन सेपरेटर, करेक्ट, एवरीथिंग विल कम, एवरीथिंग विल अप्लाई ऑटोमेटिकली just by adding one single class called table. That's it. सिर्फ एक क्लास डालनी है टेबल, एंड अपने आप वो पूरी स्टाइलिंग कर देगा. इतना ही नहीं, सी अगेन क्या करना है, टेबल प्राइमरी, टेबल सेकेंडरी, टेबल सक्सेस, डेंजर, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. अगर तुम टेबल स्ट्रिप लगाते हो, स्ट्रिप क्लास और लगाते हो, टेबल के बाद टेबल स्ट्रिप लगाते हो, तो स्ट्रिप आ जाएगा. स्ट्रिप मतलब ऑल्टरनेट कलर, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज की कौन सी रो कौन सी है, राइट? ऐसे अगर होवर लगा दोगे तो होवर इफेक्ट भी आएगा. सी, अगर तुम टेबल के साथ टेबल होवर क्लास भी ऐड कर दोगे, सो इट विल शो यू द होवर इफेक्ट. सी दिस वन, इजंट इट कूल? क्योंकि ये लिखने के लिए तुम्हें कम से कम 3-4 घंटे चाहिए स्टाइल में. टीम अग्री और नॉट? Yes, sir, I agree. करेक्ट ना? So that's it. This is all I wanted to tell you. करेक्ट, हम कल की सेशन में इसको यूज करते हैं. ओके, और अपना होम पेज डिजाइन करते हैं. ओके, Yes, sir. you do you want recording of this session? Yes, sir. Okay, Yes. okay, sure, I'll upload it. And tell me one thing, Deepa, I mean their IDs are created or not?